क्वेश्चंस ऐसे पूछो ताकि बच्चे को एग्जाम का फील आए, एग्जाम का जो प्रेशर और एग्जाम के जो क्वेश्चंस क्वालिटी है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वन ऑफ द मेथड्स जो हमने फॉलो किया था कि बिफोर एवरी डिस्कशन जो राशिद सर लिया करते थे हिस्ट्री में, we would sit down as a team, academic team, and discuss what are the questions possible and what can the answers be. And I must acknowledge कि मुझे बहुत मज़ा आया. Why? Because the type of questions which were discussed, not only from the perspective of teaching, it was a great experience of learning also. आप कुछ questions देखें. I'm talking about history questions, modern India and post-independence वाले. Look at the questions. And these type of questions are the ones UPSC asks. So एक सवाल था, British imperial ideology for India was the result of such intellectual and political cross currents at home. जो British ideology था for India, it was the consequence of something happening in Britain, something happening in Europe. और उनका जो developments थे, how did that impact the British policies in India? Very interesting question. So इसमें थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इसमें इंडिया का एक्सपीरियंस भी है, इसमें कॉलोनियल डिस्कशंस भी करना है. इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. एक और सवाल देखें. क्लैरिफाई हाउ द मिड 18th century इंडिया वाज बिसेट विथ द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी. सही पूछें जो सवाल आजकल पूछे जाते हैं यूपीएससी में, मेनी अ टाइम्स वो क्वेश्चन समझना ही मुश्किल होता है. एंड दिस वाज द इंस्ट्रक्शन that Rashid sir was following. He was very particular about कि questions ऐसे पूछो ताकि बच्चे को एग्जाम का फील आए, एग्जाम का जो प्रेशर और एग्जाम के जो क्वेश्चंस क्वालिटी है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए. So look at the brilliant question कि how did the mid 18th century India, okay, how was it beset with the specter of fragmented polity? The 1600 और 1700s था, इंडिया में बहुत सारे small kingdoms बन गए थे. The Marathas had come up. We had the breakup of lot of influence of the Mughal Empire. We had the rise of western side में the Sikh and the kingdoms of Punjab थे, इधर Bengal. So all of that discussed so beautifully done by Rashid sir. आप एक और सवाल देखिए. This I think was very interesting. It says the British conquest of India was an accident rather than the result of deliberate policy and design. जो ब्रिटिश इंडिया में आए और उनका जो इतने साल ऑलमोस्ट 200 साल तक इन्फ्लुएंस रहा, इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सीडेंट में, मतलब होते होते हो गया. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन द दस्तक राइट्स वेर गिवन, द ट्रेड राइट्स वेर गिवन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन इट बिकेम व्हाट इट हैज़ बिकम. इसको आप डिस्कस करें. बिकॉज आई मीन मे बी यू नो अबाउट ऑल दोज एंग्लो मराठा वॉर एंड द रेस्ट एंड एंग्लो मैसूर वॉर्स. क्वेश्चन था, the Treaty of Salbai formed the turning point of history of English supremacy in India. So many of us know the importance of Battle of Panipat, the importance of Battle of Plassey. But Salbai Treaty was a very important turning point, more important than what was the consequence after the Panipat or the Battle of Plassey. So ऐसे सवाल डिस्कस करना हमारा ऑब्जेक्टिव है. Questions which will force you to think, read a bit more, and ऐसे हमने तकरीबन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. And talking about art and culture, again very impressed with the questions that Rashid sir was giving us. Talking about mural painting in India is unique in terms of the theme followed by artistic creativity and religious mix. एक तो समझना पड़ेगा कि भाई फ्रेस्को पेंटिंग क्या है, म्यूरल पेंटिंग क्या है, what are different art forms, and then talk about how mural painting was unique in terms of themes, which was inclusive of the religious and other creative involvement also. वैसे एक क्वेश्चन था about rock art. Rock art जो cave paintings हैं, कुछ cave के sculptures हैं, and how they were the basis of reconstruction of India's prehistoric history. तो उसको आपको जानना पड़ेगा होलिस्टिकली. सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस क्वेश्चंस इज कि योर क्वेश्चंस preparation cannot be based on the set pattern which was followed couple of years ago. Questions are more probing, questions are
more demanding. एक question देखो, I should discuss this with all of you. It says, discuss how Sanskrit literature has impacted diversity and richness to Indian literature. आज के डेट में there has been lot of debate about national language, Indian language, roots of Sanskrit. तो उसको बेसिस रखते हुए करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस होते हुए वी फ्रेम दिस क्वेश्चन कि टेल अस हाउ संस्कृत लिटरेचर वाज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी एंड द रिचनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और थिंक अबाउट how can we evaluate the bhakti movement from its contribution to Indian culture, or think about how we can talk about how medieval art forms and medieval temples, they throw light on Indian society. So when sir was discussing along with the academic team, I had a very good time learning about all of these aspects. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप लोगों से कि do come and become a part of the process, and the process should be such that we enjoy and also learn. So advanced course हमारा open है. We are starting with geography environment के advanced course, where I and Dimple madam will be taking the sessions, and will ensure that कि questions, discussions are on the levels of UPSC, and very importantly they include current affair developments also.